गाइस, वेलकम बैक टू लर्न टेक विद स्मृति। जैसा कि हम ऊप्स के कॉन्सेप्ट में पढ़ रहे थे जावा की प्लेलिस्ट में, तो ऊप्स के कॉन्सेप्ट में हमने जैसे क्लियर कवर कर लिया था टॉपिक ऑब्जेक्ट क्लासेस एंड इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अभी हमारा ऊप्स के कॉन्सेप्ट में लास्ट टॉपिक जो था वो अब्स्ट्रक्शन था, जो कि बचा हुआ था। तो आज हम अब्स्ट्रक्शन को कवर करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं अब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन दूँ तो ये एक प्रोसेस होता है जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन होती है कोड की, उनको हाइड करने के लिए, एंड जो इसेंशियल फीचर्स होते हैं केवल उनको शोकेस करने के लिए। लाइक अगर हम कोई भी ऐसी फंक्शनैलिटी जो अदर पर्सन को नहीं दिखाना चाहते हैं वो हम इसके थ्रू हाइड कर सकते हैं। देन कुछ इसेंशियल फंक्शनैलिटी फीचर्स जो चाहते हैं कि केवल ये इतना ही कोड या केवल ये फीचर्स ही हम यूज़र को शो करा पाए, तो केवल वो ही शो होंगे। तो ये अब्स्ट्रक्शन में डेफिनेशन एक लाइन में अगर बोले तो abstraction is a process of hiding the complex implementation details and showing only the essential feature of the objects। एंड जो abstraction होता है वो abstract क्लास और इंटरफेस के थ्रू हम गेट कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। अब abstract क्लास क्या होती है, इंटरफेस क्या होता है, हम नेक्स्ट पे कवर करते हैं। abstract क्लास क्या होती है? abstract क्लास एक ऐसी क्लास होती है जिसको हम केवल डिक्लेयर कर देते हैं क्लास के अंदर, सॉरी, जिस क्लास के अंदर हम फंक्शन डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों करते हैं। लाइक एक फंक्शन हमने सिर्फ डिक्लेयर कर दिया एंड अनदर फंक्शन जो है हमने वो केवल डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों दे दिया। मीन्स अब्स्ट्रक्ट क्लास में हम डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन दोनों दे सकते हैं। अगर हम किसी फंक्शन को केवल डिक्लेयर करके छोड़ देंगे तब भी वो अब्स्ट्रक्शन क्लास होगी। देन अगर हम किसी अनदर फंक्शन को डिफाइन भी कर रहे हैं देन ऑल्सो अब्स्ट्रक्ट क्लास। अब अगर इंटरफेस की बात करें तो इंटरफेस, हाँ, इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस में हम जो फंक्शन होते हैं केवल डिक्लेयर कर सकते हैं, उसमें हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं। देन फिर जब हम जिस भी क्लास में इंटरफेस को ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे देन उस क्लास में हम उस फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन हमने डिक्लेयर कर दिया ऑब्स्ट्रक्ट क्लास में तो वो फंक्शन हम यूजर नहीं देख पाएगा। देन उसको हम ओवरराइड कर सकते हैं अपनी इनहेरिटेड क्लास में, लाइक चाइल्ड क्लास में। देन दिस इज द थ्योरेटिकल एब्स्ट्रक्शन। देन आगे हम एग्जांपल में भी बात करेंगे। चलिए अब हम एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं, जैसे कि हमने थ्योरेटिकल पे समझ लिया है। तो अब्स्ट्रक्शन क्या होता है? इसेंशियल फीचर्स को शो कराना एंड रिमेनिंग जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं, जो लाइक प्राइवेट इंफॉर्मेशन वी कैन से, उसको हाइड कर देते हैं। एंड इसेंशियल विच वी वांट दैट यूजर कैन सी, वो हम शो करा देते हैं। एंड विच फीचर्स वी डोंट वांट दैट यूजर सी इट, so we can hide through abstraction, either using class abstract class or using a interface okay। then abstract class का example, like this is our main class, you can see it। abstract class जो होती है हमारी, sorry, this is a class। abstract class क्या होती है हमारी? ये abstract कीवर्ड के साथ डिक्लेयर होती है। लाइक नॉर्मल क्लास क्या होती है? आइदर पब्लिक और प्राइवेट। क्लास देन क्लास नेम, इसमें हम क्या करते हैं, पहले abstract कीवर्ड का यूज करते हैं, देन हम अपना एक्सेस मॉडिफायर लाइक प्राइवेट, पब्लिक एंड whichever you want to use, abstract then class name, like if we want to create shape class, then this is our shape class, so this is e। एंड नेक्स्ट, abstract क्लास में हम फंक्शन डिक्लेरेशन भी कर सकते हैं एंड डेफिनेशन भी कर सकते हैं। देन आई गिव यू एग्जांपल, लाइक जो फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं उन्हें अनइंप्लीमेंट कहते हैं। लाइक केवल abstract कीवर्ड के थ्रू फंक्शन डिक्लेयर कर दिया। अब डेफिनेशन हम उस जगह उस क्लास पे लिखेंगे जहाँ हम इसको इनहेरिट कर रहे होंगे, ओके राइट। देन जिस फंक्शन की हम डेफिनेशन भी abstract क्लास में लिखते हैं उसको हम कंक्रीट या इम्प्लीमेंटेड मेथड कहते हैं। देन पब्लिक, abstract void
we declare this function as abstract function, abstract because inside abstract class. नेक्स्ट हम क्लास बनाते हैं, क्लास चाइल्ड which extend the shape class, extend shape one. Okay, and one point which is necessary that अगर हम इस क्लास को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे हैं सॉरी, तो जितने भी फंक्शन डिक्लेयर होंगे उसकी डेफिनेशन हमें नेसेसरी इस क्लास में लिखनी पड़ेगी। अगर हम डेफिनेशन नहीं लिखना चाहते तो हमें भी इसे एज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा। दिस इज अ पॉइंट। एंड लाइक अभी मैंने तो एक ही फंक्शन लिख रखा है, तो एक ही फंक्शन की डेफिनेशन लिखते हैं। अगर हम इसमें मोर देन वन फंक्शन केवल डिक्लेयर कर रखे हैं, केवल डिक्लेरेशन हो रखी है, तो हम जितने भी लाइक if we have 10 plus functions which only have declaration inside abstract class, then we need to define all the function in this child class which was extend shape class. If we don't want to define every function of shape class in this child class, then we need to declare this class also as an abstract class, because I tell you, like in abstract class we declare function as well as we define function, both functionality we can do it. So in this, if we don't want to define all the function of shape class in this, then we need to create abstract class this also. Now अभी हम इसको बिकॉज ऊपर डिक्लेयर हो रखा है, तो हम इसे डिफाइन करेंगे। देन ओवरराइड, एट द रेट ओवरराइड का यूज करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी फंक्शन यूज करने के लिए अगर हम उसको रीयूज लाइक रीडिफाइन कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं, तो ओवरराइड कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। एट द रेट ओवरराइड, देन public void, oh I'm sorry, then public void, then draw, because we define a draw function. Then we simply print for currently I'm inside child draw function, child draw function. There is a question in your mind like हमने ये केवल डिफाइन क्यों किया है, सॉरी डिक्लेयर क्यों किया है, हम यहाँ पे डायरेक्टली डिफाइन भी कर सकते हैं, लाइक व्हाट इज द यूज ऑफ दिस फंक्शन. So I tell you that you declare this function in this. If we have extend this class in 10 plus classes, and shape class because it's multiple type of shape like rectangle, circle, square, then in every shape we simply need to call, like reuse it, override it. Like if we want to draw a rectangle, then we used to use it for drawing rectangle. If we use, like if we want to draw a circle, then we use it for drawing circle. If we want to use it, we want to draw a square, then we use it for drawing a square. And if we define in this function, then the definition is same for all function, so there is no use it for different type of shapes. Then it is only used in one shape. So अगर हमने यहाँ पे इसको, so when we have declared this function in this abstract class as an abstract method, then we can override multiple times and we write definition of this function as we want, like as we have required. Like if we have required rectangle shape drawing, then we have write the function according to this. And if we want to draw a circle, then we write function according to this, and as you want to draw. Okay, so here we have child class in which extend shape class which is abstract class, and in this we override this draw function and simply print I'm inside child draw function. Now if we have create object of this child class, then ch dot draw, we can use it as, like if we run this function, then what happened.
Okay, so we got this as output. I'm inside child draw function, and if we have changed done some changes like this child class changes rectangle, and we create object of this. Now we can see that inside rectangle, and next we create u type. I will simply copy and paste it. Don't draw this. In place of rectangle, I simply replace with circle. And now I want to draw circle. And I create only two classes. You can create multiple number of like rectangle, circle, square, etc. Then this is rectangle, and if we create circle class, circle, see, and call the function circle dot draw. Then what happened? Can you guys guess? In this we can show that we can see that here I'm inside rectangle draw, then I'm inside circle draw, right? Firstly, I create rectangle class draw function, then I call circle class draw function. Both draw function definition have different, but function declaration is same, and we simply override only function, not redefine like mm, same. We can redefine, like we can have same function name in another multiple classes, like here rectangle and circle are both are different class, and we can declare a function which have same name, but those function are both are different, not same. If we remove this declaration from here, and we simply only define draw function here and here, then both are the different function. Only we can see like same name, but inside the memory both are different, because the instance, the memory of both have different spaces. Like this function have this class, and this function have this class. But when we define this function in this abstract class and redeclare, like override this function, then this definition declaration is that it takes memory for this only one time, not for this like here and multiple times we have defined. No, it takes space only for this. And this is the abstract classes. And if we talk about interface, then there is a interface have also one another use, like in Java there is a foundation, like we cannot inherit multiple classes. Multi-level class inheritance is accept, but multiple inheritance is not accepted in Java. Like we extend shape class and we also accept extend rectangle class, not, this is not possible. So for extending multiple classes we use interface. Inside interface we implement, like inside one interface we implement multiple, more than any number of interface. Then we implement this interface in a class and then use class. So I simply tell you like I have declared interface 1, interface 2, interface 3. You can declare as number of you want. And lastly I declare this interface which implement. There is a keyword difference, like when interface extend interface, then we use implement keyword, and we when class use or inherit, simple language, when interface implement interface, when interface inherit interface, then we use implement keywords. When class inherit class, then we use extend keywords. And there is a point like when class inherit interface, then then we also use extend keywords. Like in this case interface, sorry, in this interface 4 implements like interface 1 comma interface 2 comma interface 3. In this case, one interface inherited properties of three interfaces. And if we want to talk about class, then class in the class it is not possible. So for using this type of functionality we use interface.
then these are interface, and if we inherit class, inherit, then we use extends keyword, class to class, like a rectangle, sorry, same class. And if we want to inherit, we use implements keywords, then a class inherited interface. These are like this, and interface is similar abstract class. Only difference is that in abstract class we also define the function, like this is the declaration, and we define another function, void hello. This is that, this is the abstract class. So one function we define, and we sorry one function we declare, and the another function we define. But in case of interface, this definition is not allowed. Only declaration of function keywords is allowed. And in which class this interface is called inherited, the definition of function is necessary to write. सो थैंक यू गाइस, अगर आपको समझ में आया हो, एंड फॉर फर्दर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉर फर्दर वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्यों, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है एंड आगे वीडियो ज़रूर क्रिएट करूँगी.